श्रीकांत सर, थांबायचं का की स्टार्ट करायचं? श्रीकांत सर, थांबायचं का की स्टार्ट करायचं? एक 2-3 मिनिटं थांबूया. फक्त 18 स्टुडंट्स आहेत टोटल. ओके सर, ओके. हो.
Shall we proceed, sir? Yes, madam. Thank you. Welcome. Welcome all. Shall we proceed, sir? Welcome all. Yes, madam. Our next session on biodiversity and ASU. Sir, there is an echoing of my voice. And you are also. Is there any another mobile around you which is on? That might also create the echo. Mobile is on, but Is there any another mobile around? Yeah, no issue, madam. You just continue. Once you stop, I think there should not be any issue. Yeah, no issue, madam. You just continue. Once you stop, I think there should not be any issue. welcome all. Our next session on biodiversity and ASU by our one of family member, JAMC family. The one of the most helping personality of Jupiter Ayurved Medical College. And ASU by our one of family member, JAMC family. Thank you very much, madam. I cordially and respectfully welcome Dr. Shrikant Hadole, sir. Thank you very much, madam. Shrikant Hadole, Assistant Professor, Thank you very much, madam. Department of Dravyagun Vigyan, Jupiter Ayurved Medical College, Nagpur. Thank you. No need to go for introduction, madam. I have already conducted. Thank you. Okay, sir. Thank you for the session. Welcoming me. Sir, there is echo. इको आ रहा है Okay, now right. अभी echo है? Yes, sir. Still echo is there? No, sir. No, sir, no. Okay, right. Okay, so shall we proceed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, whether my presentation is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. First slide is visible. Shall we proceed? Okay, right. So we will start the today's session that is about biodiversity and ASU. So you know what is biodiversity exactly? What are the roles of each element in the biodiversity? But how it is related with the Ayurveda, with our stream, and why we should consider biodiversity? What are the benefits? What are the disadvantages if there is harm to biodiversity? We will look into this matter. Now, basically, this chapter will be covered by respected Raghavendra sir, who is going to guide us on this topic tomorrow. But I will just cover a few basic concepts and he will guide us in detail. So it will be a short session. I want all of you to participate actively. So the word biodiversity means it is the biological diversity where there is a variability in the living organisms from all the sources and the ecological complexes. You all know that what is biodiversity? Variability from plants, from various animals, various algae, fungi, viruses, bacteria, all these completely form a biodiversity. Now, how Ayurveda and biodiversity are correlated? What we want to do with biodiversity? Why are we worried about biodiversity? Let us start. Basically, Ayurveda is a life science. You all know that. The first aim of Ayurveda is to maintain your health. Mind it, the first aim, the most important aim of the Ayurveda is to maintain the health. And then the second aim would be to treat the patient if there is any diseased condition, right? So for treating the patients, Ayurveda relies on some natural products that might be herbal in origin, which are where the raw materials are basically acquired from plants. The raw material also acquired from
animal origins, just like coral, kasturi. There are n number of Kapardika. These are the contains most of the aquatic animals. Sorry, you can say shankh जिसे हम कहते हैं. That is also one of the animal origin which is used in the Ayurveda for treating the diseases. And minerals as well as metals are also used in Ayurveda for treating the patients. So in total, I can say that the Ayurveda relies on nature for its sources of medicines. All these sources are used. Now I would like to show a short clip of one of the beautiful plant that you might have seen nowadays, because this is the flowering season of the plant, which is called as Paribhadra in Ayurveda. And it is just the flowering season of the particular plant. Now, why I have selected this plant particularly? Because to correlate how a single plant can be a source of energy, a source of food for n number of, you can say, birds or animals. So I think it was around 15 days ago, I captured this video early morning. I was just passing by through that road where I found that there are multiple birds were just collecting some fluid, some water from these flowers. So I just rushed to my home, grabbed my camera, and started shooting all these, we can say, the birds. Those were attracted by these beautiful flowers. Now let's count the number of birds that I could capture on that day, particular day. Same flower, same flag. Look at the variety of the birds. This is purple sunbird. Yes. Everyone is busy collecting that nectar out of water. So this was about a single plant, which is Paribhadra. So did anyone counted the number of birds approximately? 9. Right. There were 9 birds, and I could not capture 4 One to 5 squirrel. birds because they were quite quick enough so that I could not capture the moments. But during that half hour, I could see around 15 birds along with some bees, like squirrels. There were multiple animals who were attracted by the single plant. So this is what the biodiversity means, and this is how each and every species is dependent on other living organism. Now I'm collecting such shootings where a plant from Ayurveda
which is commonly used in Ayurveda for medicines preparation, and the various animals that are attracted by the plants. So right now I have collected almost 7 to 8 plants only, but this is an ongoing process. So I will be collecting this for years together. So finally, what is biodiversity and what it ensures? The biodiversity ensures that each species get equal chance for its survival, and the most important thing, no single species become overpowerful or too powerful that it can destroy the others. The biodiversity by nature is ensuring that all these things, that nobody becomes too powerful and each and every species gets equal chance of survival. But the question arises, who disturbs biodiversity? So before going towards the disturbance of biodiversity, I would like to shortly introduce about the importance of biodiversity, why we are worrying about biodiversity and all that. The benefits of biodiversity is as important as we breathe the air, we drink the water, and the food we eat. We have 3 basic needs, but all these basic needs are provided by biodiversity only. So we are 100% dependent on the nature and the biodiversity. That's why it is one of the most important thing. And why it is important for us as Ayurveda person, I will explain. We cannot exist without biodiversity. Now, what biodiversity provides us? You all know that it provides shelter, it provides food, it provides economy, it provides travel, technology, building material, clothes, culture, fuel, everything. Each and everything is provided by the biodiversity, by the ecosystem. Now the question arises, I want your opinion. Which is the deadliest animal on the planet? Yes, Human. anybody? Anybody? Humans. Humans. Yes, exactly. You got it right. Human is the deadliest animal on this planet because over the period he has developed his mind, but he has also destroyed the biodiversity like anything. There is no other species on this planet who really destroys the biodiversity like the humans that we do. Now let's talk about why ASU, that is Ayurveda, Siddha and Unani, is correlated with biodiversity. Basically, Ayurveda, all you know that it is a science of life where we use the drugs that are from animal as well as plant origin. And that is the main reason we are dependent on the nature, that is biodiversity. Now, so what is the cause of worrying about that? We will understand it. Basically, most of the preparations from the Ayurveda are prepared from herbal and herbo-mineral combinations. Now, you might not be knowing the fact that most of the herbal collections, that is raw drug collection, is from wild. Almost 90 to 95% of the raw drugs collection is from wild. Now, what is the exact meaning of wild? That is, the plants which are harvested is not planted by anyone. It is not under the cultivation. Most of the plants, that is almost 90 to 95% of the herbal harvest is from nature only. There is a system where the forest department deploys some persons around the village.
They are the registered collectors of the particular plants of that particular region, and they harvest the particular, we can say, medicinal products like fruits, roots, bark, whatever it may be. So only the registered collectors have the authority to collect the plants raw material from the forest. You cannot go personally and you cannot collect it as per the law is there. So almost 90% collection is from wild, and nobody is worrying about its sustainability, its growth, its management. That's why these collectors, they knowingly or unknowingly hamper the system. They are mostly illiterate or semi-literate people. So they hardly know anything about biodiversity, how nature and humans are connected. What if we destroy the nature, we destroy the biodiversity? That's why they just go into the forest. Though they have got some standard harvesting procedures, but it is not strictly followed. That's why they, most of the time, knowingly and unknowingly, they destroys most of the species. Now, there are multiple endangered medicinal plant species. Endangered means that are on the verge of extinction. These species also got extinct by the, we can say, the improper handling of these collectors. So that's why we are worrying about the biodiversity, because the humans are only responsible for disturbing this biodiversity. In India, approximately there are 8,000 species, 386 families, 2,200 genera of flowering plants, which are the main source of raw drugs. Now, we all know that humans are mainly responsible for major losses to the biodiversity, but there are some other factors also which causes the losses to the biodiversity. Now we will just see it one by one. The first one is rainfall. The most important is deforestation, where humans are mostly responsible. The reasons might be various, like spread of agriculture, logging, firewood collection, heavy grazing, urbanization. The reason might be anything. There might be any reason, but ultimately we are causing the loss to the biodiversity, which will ultimately affect humans only. The degradation of water bodies. There are a number of reasons which is responsible for the degradation or the causing impurities in the water bodies. Lack of pollinators, bees, various birds. There are some developmental influences like submersion, extra infrastructure, expansion of the roads. We all know that these are the facts that we have studied in, I think, 7th, 8th, 9th standard. Now, some of the main points we will be taken care, we should know about that. That is agriculture and forestry methods, where monoculture, that is just relying on the single plant species or single, like rice, only wheat. Because we should use the polyculture method, where multiple species should be used for a cultivation. Otherwise, it destroys the biodiversity. That's why monoculture should not be practiced. Encroachments by various ways, overexploitation of particular species. So the most important part is overexploitation of medicinal plants. Now, the whole medical system, may it be modern or Ayurveda or homeopathy or Unani, around 50% or more part is dependent on the natural resources. Mind this, allopathy also depends on natural resources or few of the raw materials. That's why whenever there is a requirement of
or where is there a high demand of any particular species or plant or whatever, human by nature tries to just use it as much as he can. That's why there is over exploitation. The bulk of the traded material is still from the wild, because as the demand rises, human, the greedy animal on the earth, he just try to trade as much as he can without worrying about the maintaining the biodiversity. That's why the medical system is also responsible for losses to the biodiversity. Now, what are the reasons for losses to the biodiversity? We have seen that, but what is the effect of loss? Now, as the biodiversity is lost, it also loses and diminishes the supplies of the raw herbs, because ultimately Ayurveda needs medicinal plants. Nowadays, there is scarcity of most of the Ayurvedic medicines due to COVID pandemic, because the demand is so huge that the pharma company is unable to manufacture it at that rate. The same situation is about the allopathic medicines also, because the demand is very high. The biodiversity also significant contribution in preventing the diseases and illness. Yeah, we have covered that. Now, how it impacts? It impacts us in various ways. The first thing is it makes the things which is in demand costlier. Day by day, all the things which are in demand is made costlier. The second and most can say the hazardous thing is the greedy human tries to adulterate that particular thing with the another thing, which is similarly looking or having almost similar properties or morphology. This is the most important thing that should not happen. And the depletion of forest area and the medicinal plants, which finally leads to disappearance of classical preparations. Now, in the, I think yesterday only, we discussed about Sanjeevani Bhuti. Respected principals us threw a light on the Sanjeevani Bhuti, the Ramayana, and what was the situation of Ayurveda at that time. Now, the Sanjeevani Bhuti, we don't know where is the source of Sanjeevani Bhuti, where to find it, what are the exact sources of Sanjeevani Bhuti. This is the loss of biodiversity, that we cannot get the precious medicinal plants or various raw drugs. That is disappearance of classical preparations, because this is one of the classical preparations as per the Ramayana. Now, these are the corals. You might have seen some videos where you have seen the corals in the sea life. These are commonly used in Rasa Shastra department that you are going to learn in second year. Now, this is the chemical effect of some chemicals which is causing the damage to the corals, because basically on the left side you can see the healthy corals, and on the right side these corals are damaged due to chemicals. So this is how the biodiversity, the aquatic biodiversity, is also destroyed, obviously by various reasons. Now, there is a publication where the medicinal plants that are endangered in the particular region or particular country are mentioned. That is called as a RAID data book, where there are multiple categories like least concern, like the plants which are available in abundant quantity, endangered, threatened, critically endangered, means the plants which are at the verge of extinction. So almost there are 195 plants in India which are at the verge of extinction, just because of the greedy nature of the humans, because we are not maintaining the biodiversity properly. Now, just have a look at some of the authorities, because respected Raghavendra sir will cover all these topics. So I will just touch
subjects only. There are multiple authorities who are working for biodiversity protection. Like these are the first few are the international authorities, like Conservation on Biological Diversity, that is CBD. IUCN, you must have heard this word in botany. International Union for the Conservation of Nature. These are the international authorizations who are really working hard to preserve the biodiversity. World Wildlife Fund, Fauna and Flora International, FFI. In India, we are having the National Biodiversity Authority, and in case of the authority which is a part of our system, that is Ayush Ministry, that is called as NMPB, National Medicinal Plants Board, which in association with various forest department works on specifically the medicinal plants of each and every region of India. So these are the some few authorities who are working to protect the biodiversity. I will not go in deep. In 2002, the Biodiversity Acts came into the action by the Parliament of India for the preservation of biological diversity in India, with the three major goals. The first one was obviously the conservation of biodiversity. Then sustainable use of components, because this should not be the case that you are just preserving the biodiversity and you are unable to get the proper harvest or the proper raw material. So there should be the sustainable use also. And the last is fair and equitable sharing of the benefits, because there must be sharing of the benefits. It should not be the case that you have preserved the endangered plant but nobody is able to use it. Then what will be the use of biodiversity? Because it is interdependent. That's why these are the three major goals of Biodiversity Act. The Biodiversity Act also ensures the protection of traditional knowledge. Ayurveda is a traditional knowledge. And equitable sharing of benefits that are arising out of the such knowledge, that is traditional knowledge. Now, we are the students from the field of Ayurveda. How we can support, how we can ensure that we will not harm the biodiversity and we will help to flourish the biodiversity. The government is also taking some of the cares, some of the major actions to protect the biodiversity. Government is also implementing various laws for cultivation of such species. In 2019 November month, I had been to Palampur in Himachal district, Himachal Pradesh, where there was a institute which was dedicatedly working on Himalayan plant species, just like Keshar. You all know that Keshar. They were trying to grow these plants to tissue culture technique. There are n number of plants like Kutki also. You will learn all these plants in second year. It was really one of the best experience of my life to see that these organizations are really working hard to preserve the endangered species. If anybody's get the chance to visit that institute, you must visit that institute. This is one of the most important work that is going on over there. Next, we can do is the in situ conservation by establishment of various national reserves or the biospheres. We should promote the in situ conservation. Ex situ conservation. Now, the most important thing, that is the last point, is creation of medicinal plant gene bank. The gene bank is mainly responsible to preserve the endangered threatened plant species, and where we can propagate that plant, we can cultivate through various techniques like tissue culture. We should properly assess the population size. Actually, this is the part of related to
medicinal plant species, specifically from second year. But as we are dependent on nature for our raw drug sources, so you must know about these. To popularize the potential avenues of medicinal plants amongst the local farmer. Now we must promote our farmers for this medicinal plants cultivation, because you all know the situation of farmers in our country is very poor. They are not able to get enough, they are not able to earn enough from their traditional crops, and there is scarcity of medicinal plants also, and the demand is huge. So we must promote the farmers for cultivation of medicinal plants. Whenever we talk of the medicinal plant cultivation, there must be some proper techniques of agrotechnologies, proper harvesting technique, proper techniques for safety measurements, and proper processing. So these all should be considered while we talk of medicinal plant cultivation. And we should also try to preserve the traditional knowledge, because all the things that are related to use of the medicinal plants from jungles or the forest is not mentioned in Ayurveda. There are some traditional healers also who are practicing Ayurveda or the traditional medicines since ages. So we must also preserve their knowledge. The question arises, what we can do? As the natural sources are finite, that is limited, the interdependence between the environment and the human species must be understood properly. We must ensure that the interdependence is at the utmost importance, and we should give it that importance. And we should deploy the new public health policies or practices which will promote the biodiversity. We should try to cultivate the threatened or endangered medicinal plant species as much as possible. We should try to collect the samples from the wild field only if it is available in abundance. I will tell you some experiences where the second year batch usually goes in the forest area for excursion, that is for plant identification in the nature. In second year, we will go to the forest region around the cities, or we can also visit the forest out of the Maharashtra also. At that time, we might collect some specimens from the forest, but this should not be the case that there are only 1 or 2 plants of that particular species and we try to collect that plant. Because if the plant is available in abundance, we should touch that plant only then. If it is not available in abundance, we should never harm that plant, because we are hampering that bioavailability, biodiversity of that particular species. It might be the threatened species. We might not know about its status. That's why we should only collect some species that are available in large quantities. Now, the rare drugs should be replaced with the abundant drugs. We should try to correlate the drugs, and we should try to replace them with the abundant drugs. There is example, that is Pravar can be replaced with Mukta, as it can be grown artificially. So after all, what we have to do, being from the field of Ayurveda, we should protect the biodiversity, because the future, as we are going through the pandemic, and the main reason for this pandemic would be, that might be the reason that as the humans are being more powerful and they are not worrying about the maintenance of the nature itself tries to control the humans by various means, like there can be floods, there can be earthquake, or there can be pandemic like this.
So this might be the reason for such pandemics. That's why we should protect our biodiversity. So this was all about today's session. Raghavendra sir will guide us in detail about this particular topic. Thank you. Thank you very much for this, inviting me for this session. Students, have you any question? Please ask sir freely. It was a wonderful presentation by Harode sir, Thank you. Thank you very much. and Sir. hopefully it had created some interest about biodiversity and protection of plants among the students. The some things which we need to learn apart from the syllabus, Right. and students must have also come to know that even the allopathic drugs, they require raw drugs from the herbs, plants, and basically the source of most of the allopathic drugs is plants and minerals found in the nature. Right. And we need to protect the nature while extracting the its nectar, its rich source of rich medicines. We at the same time we need to protect the nature also. So it's all in all, it was a wonderful lecture. I'm quite impressed. Thank you. Hope Thank you and the very same much, is sir. the case with you all also. And one thing that while sir has enlightened us on various topics of biodiversity, at the same time, I want to lament on some of the things that as one issue was raised about the Sanjeevani Bhutti, and likewise the things. Right. There are many Jivaniya Ganadravyas, what Right, we are sir. having: Vrishabhak, Meda, Mahameda, Kakuli, Kakuli, right, sir. Vrishabhak, etc. And many have identified those drugs with some of the presently available Right, sir. medicines. But Exactly. still, there are few people who doubt their identity. Right, sir. So still the dilemma is going on, and despite their merits, what are mentioned in our text, they are not yielding the result like that. So that may be one of the reason for taking the doubt for that medicine, because the like Sanjeevani, which has been told as the wonder drug. Yes, sir. So and it's and the presently available Sanjeevani is not yielding the wonderful reactions. Right, right. So that may be the case, but even then, there are books called Nighantus, which have contributed immensely Right, in the literature of Dravyaguna. yes. Rather, I must say Dravyaguna is that only. And Exactly, sir. while we read convention, we come across the conventional Nighantus like Dhanvantar Nighantus, Madanpal Nighantu, Raj Nighantu. Raj Nighantu, These are Golden some Nighantu. common Oldest, names right. we know. So I want to today I want to let you know there are some other rare Nighantus which have been published nowadays, and you Yes. must have an idea about those also. So can you see me? Yes, sir. You are visible, sir. Okay. So I will show you one by one those. This is one called Ashtang Nighantu. Can you see this? Yes, sir. Yes. One of Can the you see oldest. Yes, sir. Okay. This one. Then another one is there, Saraswati Nighantu. Yes, sir. Can you see? Can you all see this? Yes, Yes, sir. it's visible, sir. Yes, sir. Then another one, there is Laghu Nighantu. Yes, sir. This is by Vyas Keshav Ram Virachita. Vyas Right. Keshav Ram Virachita. And Ashtang Nighantu is by Srimad
Srimad Acharya Vahat name we have, Mahakacharya. heard Yes, sir. in the Ayurveda history So Then- Saraswati Nigantu is by sir? by Avdhan Saraswati. Okay, okay, sir. And Bopadev Virachit Hriday Deepak Nigantu. This is Hriday Deepak Nigantu. Yes, sir. Yes, sir. This is Bopadev Virachit. Then another one is Chamatkar Nigantu Yes, sir. of Raghavacharya. Chamatkar Nigantu. Then there is a book called I'm forgetting. There is Sushin Nigantu. Sushin. Ayurved Mohanad. Is also called as Ayurved Mohanad. Sushin Nigantu. Yes, sir. You see, there you will find two names Sushin. The one, the Sushin Vaidya who treated the famous Lakshmana, but he is Yes, not sir. this Sushin. This Sushin is different from that Sushin. Okay. Sir. There are some other books called, this is Paryay Muktavali, giving the synonyms of various drugs. Ratnamala. Haricharan Sen. This is of Haricharan Sen. Virachita. Okay, okay, sir. And another is Paryay Ratnamala, Shriman Yes. Madhavkar Kruta. This is by Madhavkar. Another book, Paryay Ratnamala. Yes. These are all books related to Dravya Guna. Another one is Saushrut Nigantu. Yes, sir. So one of the oldest one. This one, now there are some books, those are referred as Shataka, Yoga Shataka Yes. of Vararuchi. Yes. Vararuchi's name is famous in Ayurveda history. Another is Bopadeva Shatak. Okay. Another is Yoga Shatak by Nagarjuna. These are all Dravyagun books. Another is Avdhan Saraswati Krut Prashasta Aushat Sangraha. Can you see this? Excellent. Yes, yes, sir. Okay. And now that day we have seen that Vriksha yesterday Ayurveda only, Vriksha Ayurveda of by Parashara. Yes. Durupala. This is of Durupala. Durupala. Yes. And this Vriksha Ayurveda of Parashara. Parashara. Yes, sir. So these are all the books of, these are the books of botany. Yes, sir. Dravya Guna. And this one is Chandra Nigantu, another, Okay. by Acharya Chandranandan. Right, sir. 1,100 year old, these books. Right, sir. So there are so many Nigantus, and these are classical Nigantu, Dhanvantari Nigantu you can see. Yes, sir. For the knowledge of students, Raj Nigantu you can see. Kedev Nigantu you can see. These are all books of Dravya Guna, ancient books. This is Madanpal Nigantu, you can see. Yes, sir. And there are some other books which are not of Dravya Guna particularly, but they are Sangraha Related to books, plants. Right, sir. related to particular preparation of particular drugs, but they have covered so many of the things regarding Dravya Guna. So among that, there is this one book by Vaidyanamrita by Moreshwar Bhatta. These are rarest books which have been published very recently. One is Parahita Sanhita. Another is this Siddhasar Sanhita of Ravi Gupta. This is of 7th century, 1,400 years old. And same is Yoga Shatakam, 1,400 years old. This is with Yoga Shata Vadyavallabha commentary. This is Madhukrut Hara Mekhla. This book contains actually on Gandha Shastra. Dentistry regarding. Yes, sir. The medicines which emits fragrance.
Okay, Gandha. and Gandha Shastra. There, you see, their contribution in treating the diseases of different gandhas, scents, perfumes, fragrance, that have been also mentioned in our science. Such is the beauty. They explore to the minute level the potential of our drugs. Another is Vaidyak Prasaram by Gadadhara Acharya, and another is Yoga Ratna Samuchaya by Chandra. So this is also 1100 years old. So these are some rare books, and we need to have these books in our library also. So these are the books which are in my personal collection, but you need to have it in our college library. Yes, sir, Just we must have ensure this. that we have all these books in our college library. Definitely, sir. Okay, thank you. Thank you very much, sir, for encouraging the students for various books, that because students, these are the books from second year and the subject is related to Dravya Gun. The sir is a professor from the Department of Roganidan, but he is having a collection, huge collection of each and every subject related to Ayurveda. This is really something great. So I will request the other faculties also to get inspired, to get motivated, at least have the rarest collection of books related to their subject at least. Samhita peoples, Shalya peoples, Shalakya peoples, everyone. Yes, sir. And not only of your books related to your subject, you collect all other books. I have develop your personal library. All great men, they have their personal library. Hope all faculties will take it positively. Yes, sir. Yes, sir. definitely, sir. So, Absolutely, sir. Absolutely. Yeah, this is, and I congratulate Dr. Shrikant sir for this wonderful presentation. So, Thank you very much again, sir. Yes, sir. It was Vaishali very madam, prepared shall we talk. proceed further? Yes, sir. Very nicely prepared talk. Congratulations, sir. Thank you very much, Yes. sir. And unfortunately, exactly after 1 month, the whole world is going to celebrate World Biodiversity Day on 22nd of May 2021. Right, sir. But So if we can encourage second year BMS students to do something on this occasion, it would be great. yes, sir, sir, I would like to add something. Thank you very much for calling this word, because I'm collecting some seeds. I'm preparing a seed bank so that we can grow some of the plants which are in the vicinity of our region, because it's our duty only to propagate the plants. So Yes, I'm collecting. That's great. And actually, we planned the visit of second year students for botanical tour around the places at Nagpur. But Yes, sir. unfortunately, due to this corona pandemic, we could not arrange that. But I think Shrikant sir had taken a lot of initiation in that regard. Yes, sir, sir. Definitely, once this pandemic situation is Under control, we will again go through. We will definitely definitely, sir. And for this batch, definitely, because the students which are interested, for them, we are going to Yes. do everything possible from our side. Yes, sir. And those who are not interested, I think You need not to what worry we about can it. do. Yes, sir. Okay. Right, sir. So, thank you very much. Thank you, sir, for your knowledgeable lecture. Thank you very much. Thank you. Welcome, Urkude sir. Our next session is on yoga and meditation by our own family member, Dr. Gauri Shankar Urkude sir. Good afternoon, all. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Gauri Shankar ji. Good afternoon, sir. Carry on. All the best. Thank you, sir. Cordially Thank you very and much. respectfully welcome to Dr. Gauri Shankar Urkude sir, MD, PhD in Swasthar Uttam, MA in Sanskrit, Diploma in Therapeutic Nutrition. He is a certified yoga trainer, certificate in Ayurveda Sattva Vajay, and certificate in
Sanskrit Sambhasha. He is working as an associate professor in Department of Swasthya in Jupiter Ayurved College, Nagpur. He is the director of Aishwarya Ayurved Pratishthan at Umre, one of the director Vision Ayurved Academy at Nagpur for post-graduation entrance preparation. He is a consulting Ayurved physician, Jivak Ayurved Chikitsalaya at Nagpur, and Ayurvedic physiotherapist. Sir had a research paper, more than 10 research paper published in international journals. Thank you, sir. May I request Dr. Urkade sir to start his presentation. Thank you, ma'am. Can everybody hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start. Let me share my PPT. Just give me a response that are you able to see my PPT or not? Yes, sir. Okay, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Well, let me do slideshow. So friends, let's start. Okay. The topic of today's my lecture is yoga and meditation and a need of society. Okay. So friends, first of all, let me congratulate all and welcome to our divine science named Ayurveda. Okay. I am using word here Ayurveda, that is a divine science. Why I am saying this? This particular science was evolved long years ago. Okay. And nobody knows how it was evolved and what is its origin. Itself in this particular treatise related to Ayurveda, it have been mentioned that this particular science it is a eternal one. Means it don't have any origin. Okay, called as Anadi, and it is a Shashwat. Shashwat means persistent for all life until the end of this particular era. Okay, so first of all, let me welcome all of you, friends. Let me assure you that here you are not by a chance. Okay, you have get admission in BMS or you have get admitted in this BMS course. It is not just by a chance. Okay, then rather I will say you are selected for being witnessing a change. Before one day, Dr. Kodwani sir's lecture was there. Recent advances in the Ayurveda. They have mentioned clearly that this is the golden era, means it is giving an opportunity to all Ayurvedians to prove themselves and to uplift their science. Okay, and this is a era of change, means you are witnessing this particular change, that is from old edition old tradition we are going to old new edition. Okay, so that's why I'm saying you are not here by a chance. Rather, I will say you are selected for being witnessing the change and being a part of this particular change. I myself believe that all of you come here, all of us are come in this particular Ayurveda field not by chance, because other than this, we have brought here by some invisible energy. In the morning's lecture, Dr. Prakash Itankar sir mentioned that they had shown you that Akash Ganga and planets were arranged in that Akash Ganga, and each planet was at some distance from each other. Okay, then at that time they have mentioned that why these two planets are separated from each other. They are separated by a energy. Okay, that invisible energy nobody can say, nobody can see it. Otherwise, अगर वो इनविजिबल एनर्जी वहां पर नहीं होती तो दो प्लैनेट्स एक दूसरे से क्लम्प हो जाते थे, बट इट इज नॉट हैपनिंग. दिस मीन्स देयर इज अ समथिंग that
keeps it in position. Okay, we say it as a gravity and all that, whatever it may be. So such type of energy is present. We call it as a Chetan Tattva, which makes us activated. Okay, and that some invisible energy have brought you here to make a change in this particular field of the Ayurveda. So आपका सिलेक्शन हायर स्टडी दैट इज द वेल नोन या फिर वेल कॉल्ड दैट सो कॉल्ड हायर स्टडी में यानी कि एमबीबीएस में नहीं हुआ, इसका मतलब आप डिप्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक किसी एनर्जी ने लाया हुआ है जो आगे जाकर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाली है। अभी ही आपको सर ने बताया कि इतने सारे इतना बड़ा ट्रेजर हमारे पास है कि जिसको सिर्फ आज के समय के अनुसार हमें लोगों के सामने लाना है और उसको थोड़ा सा एक अपडेट करके आधुनिक भाषा में बताना है। तो उसके लिए इतना बड़ा चांस आपको इसके थ्रू मिलने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि बी अ पायोनियर, मतलब आज तक जो आयुर्वेद में नहीं हुआ वो करने का चांस आपको मिल रहा है। मीन्स यू don't have to be a trend follower, you have to be a trend setter, that is you have to be a pioneer, and if you be a pioneer then you will get blessed. okay, जैसे कि अभी कोरोना की सिचुएशन चालू है और इस समय में यदि कोई हमारे जो आयुर्वेदियन है अच्छा काम कर रहे हैं, they are getting blessed with that. okay, in the same way if you do something in the field of Ayurveda for research, उसको ये पूरे धरातल पर पृथ्वी तल पर काफी मान्यता मिलेगी और अच्छा नाम मिलने वाला है। तो ऐसा चांस आपको फिर से नहीं मिलने वाला था और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चांस से यहाँ पर नहीं हो, यू आर नॉट हियर बाय चांस, यू आर सिलेक्टेड फॉर बीइंग विटनेसिंग अ चेंज एंड बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। ओके, सो बिलीव एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, दिस स्लाइड इज फॉर वेलकमिंग यू, is for welcoming you. Now let us enter to the topic of my today's lecture. Outline is why this session. Second, we will see the background of the yoga and meditation. Then why yoga and meditation is necessary to learn in this particular era. Then basics of yoga, that is like the origin and the history. And last one, that is very much important for you, that is the opportunities. Okay, so we will go through these topics. So before starting my session, let me ask you all of you friends, जब आपने एडमिशन ली उस वक्त आपके मन में जो कोई भी सवाल थे, कुछ दिन तो शायद आपने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने ग्रुप पर कुछ चीजें डालना शुरू किया, उसके बाद आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए थे या और कुछ ऐसा हुआ था? कैन यू आंसर मी, एनीबॉडी? हेलो Students, be frank. Yes, sir. Negative thought came in our mind. Okay. When we saw the words, we were afraid of the words. Okay, good. And after, my next question is, and after this last 5 days, okay, you are hearing the lecture, you are trying to adjust with this particular environment, you are trying to grasp these new things. After that, when some of the researchers faced you and explained their works here and told you how this particular science works and how you will get a chance to elaborate yourself, after that, at this stage, how are you feeling? Are you getting some energized or not? Sir, Yes, sir. Means, are you getting a clue that you can do something, not just a something, a lack of work you can create here? Are you ready for that? yes, sir. Yes, sir. Good. Friends, Yes, sir. this particular positivity is much important to get this particular subject, okay, to stand in this particular era.
and for that purpose we will need a side by side some energy to us, and to get that energy this particular topic is here. Okay, so we will go to next slide. First, why this session? To get information, basic information about this personalized science. Okay, हमें ये पता होना चाहिए कि योग और आयुर्वेद यहाँ पर पर्सनलाइज चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि पुरुषम पुरुषम विक्षम, मतलब हर बॉडी जो है, हर पर्सन जो है वो अलग है, भले ही उनमें टिश्यूज, ब्लड एंड ऑल व्हाटएवर आर द ऑर्गन्स आर सेम, बट all the constitutions are different. Okay, so this is a personalized science. So we have to get basic information about this particular science. For that, this is the session. Second, for building stronger mind to face all the obstacles. आपको ध्यान में आया होगा कि आपने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद आपने एंट्रेंस का प्रिपरेशन किया, एंट्रेंस के प्रिपरेशन में आपको ऐसा ध्यान में आया काफी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, पढ़ रहे थे, डिप्रेशन आ रहा था, उसमें से भी बढ़ते उभरते, बढ़ते गिरते उभरते आप यहाँ तक आए हो, और वो जब ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे थे, जो आपके साथ हो रहा था, और उसके बावजूद आपके सामने एक रिजल्ट आया कि जिसमें आपको पता चला है कि कहीं तो भी हमें एडमिशन हायर, जो सो कॉल्ड हायर एजुकेशन सिस्टम है जिसमें जैसे कि एमबीबीएस जैसे, उसमें नहीं मिल पाई है। उसके बाद जो हमारे मन में कुछ डिप्रेशन जैसा हुआ था, और उसमें ये जो हमारा ट्रांजिशनल प्रोग्राम हुआ जिसके कारण आप थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट होना शुरू हुए, उसी प्रकार से इसके आगे भी जो आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, व्हाटएवर आर द ऑब्स्टेकल्स यू आर गोइंग टू फेस इन नियरेस्ट फ्यूचर, फॉर दैट वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर माइंड फॉर यू. ओके, for that particular purpose this is the session. Then to grow up with the greater physical and the mental power. दोस्तों फिजिकल और मेंटल पावर आपको क्यों लगने वाला है, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, as we progress in next particular era or the particular time, you will get why it is much needed. Okay, and to know about the things which we are going to give a chance to fly, मतलब आपको आपका करियर बिल्ड करने के लिए भी क्या मिल सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, ये सोच कर ये सेशन रखा गया है या फिर बिल्डअप किया गया है दोस्तों. So what is the background? We all know that right now industrialization and urbanization and the development is going on. Everybody is in the race. सब जन भाग रहे हैं. Life is a race, है ना? 3DS का पिक्चर आपको याद आ रहा होगा. Life is a race and you have to win the race. But while trying to win this race, we lose the focus on self to achieve these desires. Okay, तो हमारी जो डिजायर्स है, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, उनके पीछे भागने के इसमें हम क्या कर जाते हैं, हमारा फोकस लॉस कर देते हैं. द लॉस ऑफ फोकस ऑन सेल्फ टू अचीव डिजायर्स. We start to compare with each other, to compare us with each other, okay, which gives you an unstable mind. And within all these, we run within this particular circle and we forgot our strength. Is this a situation or not? क्या आज हम हमारी स्ट्रेंथ को भूले हैं या नहीं, या हमने कभी हमारी स्ट्रेंथ को पता करने का सोचा ही नहीं, और शायद उस वजह से आज की ये कंडीशन हमारे ऊपर आई हुई है. लॉट ऑफ साइकोसोमैटिक कंडीशन मेड अस टू थिंक. आज के इसमें हम देख रहे हैं स्ट्रेस बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, इधर उधर दौड़ भाग बढ़ रही है, हम खाना पीना के हमारे टाइमिंग्स बदल गए, सब चीजें अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट रेस के कारण बदल चुकी है. और ऐसे इसमें जो साइकोसोमैटिक कंडीशंस, डॉक्टर रवि परदेसी सर हैव मेंशन in their last lecture that there are 70 to 80% of the cases are seen that are of the psychosomatic diseases. Means psycho means here related to the mind or your emotional state, and soma is the body. Okay, and the health conditions related to these have made us to think. Means this is a good chance, friends, and we got a chance. How we got a chance? It is through the new agenda. आपको ये पता होगा कि अभी एक इंडिपेंडेंट आयुष मिनिस्ट्री जो गए कुछ साल में लाई गई है आगे, या फिर वो अरेंज करी गई है, उसमें से A फॉर
Ayush, sorry, A for Ayurved, Y for Yoga, U for Unani, S for Siddha, and H for homeopathy. All the alternative sciences are clumped together, and they are trying to develop this particular alternative medicines. And in that we have the Ayurveda and yoga at ahead. Okay, अब आप सभी को ये पता होगा कि गए कुछ सालों में हम लोग योग दिन मना रहे हैं. We are celebrating a yoga day on 21st of the June. Okay, these have shown that yoga have reach to all over the world. मतलब हर एस्पेक्ट पर, हमारे हर जगह पर, इस दुनिया के हर जगह पर, हर कोने में आज योग पहुंच चुका है. ठीक है, and world is citing at us with a hope, because there are lot of researches going on in all over the world, through which we are coming to know that this is a golden chance to face all the problems which are going in this industrialized and the urbanized era. Okay, and this is a chance for all of Ayurvedian persons through this particular field, that is the yoga and the meditation. If you master this particular field, you have a huge इसको हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा आकाश है आपके लिए छलांग मारने के लिए, उड़ने के लिए मिलने वाला है. ओके, सो दिस इज अ गुड चांस फॉर यू फ्रेंड्स. System of medicine in ancient era. Sorry. Let's stop for just 15 seconds. Here is a large loud sounds are there. Okay, let's go ahead. The systems of medicine in ancient era. कौन से systems उस वक्त में वर्क करती थी? तो सबसे पहले थी युक्ति व्यपाश्रय, means introducing a medicine with a fine decision. Means there is a doctor who sees patient, who do रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, and decide the line of treatment. Okay, with his knowledge. That is the युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा. Second one was the दैव व्यपाश्रय चिकित्सा. The diseases which cannot be cured with the युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, there was the introduction of the management in the form of the mantras. Means वहां पर होम, हवन, मंत्र इस तरीके से. और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में ये माना जाता था कि वहां पर जो कोई भी डिसीज है जिनके कॉजेस हमें पता नहीं होते, ऐसे वक्त में उनको इन ट्रीटमेंट्स द्वारा उसको ट्रीट करने का प्रयास किया जाता था. और इसका जो उल्लेख है आपको वेद और उपनिषद में मिलेगा. ओके, उस पश्चात next system of the medicine was the Sattva-Uday. Friends, right now we are entering our subject, that is the Sattva-Uday. Sattva means here mind. Okay, and we have to control it. The controlling mind and making it stable, it is the one of the system of the medicine in the ancient era. Means उस समय में भी लोगों को माइंड रिलेटेड डिसीजेस होते थे, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी हेल्थ कंडीशंस होती थी उसको ट्रीट करने का तरीका उस वक्त में अच्छा खासा डेवलप था. और आज हमें ये अच्छा चांस मिला है उसको ऊपर लाने का. कहीं तो भी काल के इसमें ये सब चीजें हमारी पीछे पड़ती गई, और इसे ऊपर लाने का जो जिम्मेदारी है, वॉट एवर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स. फॉर दैट आर वी मिसिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव. दोस्तों, आज ऐसे रिसर्चेस देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में अभी हम देखेंगे. As we all know, this is our brain. There is a part named amygdala. Okay, what does it do? What is its function? It is responsible for memory recall and emotional judgment. Let me give an example. You are sitting in your OPD. A patient who is unconscious comes to you. Right now, you are going to that patient. You are seeing his nadi. After seeing nadi, you calculate some doshas and whatever is the condition of this particular patient, and at that time you will require your memory recall, what you have learned during the BMS, you are during the MD, during the PhD, working in that PHCRH. Okay, at that time whatever you have learned, you have to use this right now. And for that memory recall, important is this particular brain's area, amygdala, and this particular part is related to your emotional judgment.
Then what researchers have found that, just see, a simple breathing rhythm. We inspire the air, okay, which contains the mixture of oxygen, nitrogen, and the carbon dioxide and other gases. Okay, this particular rhythm of the breathing, what it does or what is do, just see here, breathing is not just for oxygen. The modern researcher says, what they say, breathing is not just for the oxygen, it's new linked to brain, it's now linked to brain function and the behavior. The rhythm of breathing creates electrical activity in human brain that enhances the emotional judgment and memory recall. Friends, just take a view over this. They are saying, these modern researchers are saying that to maintain your memory recall and emotional judgment, to have a control over the emotional judgment, a simple rhythm of breathing is responsible. This or this is proven by this modern science people or researchers. They have, but friends, we are missing all this, as all this knowledge was previously practiced in olden era, that is the our ancient era. Okay, one more research, let me show to you. That is, this is the breathing, and this is a this is the Stanford School of the Medicine, which have means the study carried on this particular school of medicine. The study shows that how slow breathing induces tranquility, means how the breathing makes your mind calm. आपके दिमाग को शांत ब्रीदिंग कैसे करता है, ये इन्होंने प्रूव किया, जो कि हमारे शास्त्रज्ञों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, दोस्तों ऋषि शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज, ये कोई तो भी ओल्ड वर्ड है ऐसा समझना, आज से हमें बंद करना है। ऋषि शब्द का मीनिंग ही ये है, दे आर द, वो पक्के साइंटिस्ट लोग थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी सालों तक ये सब परीक्षा करके उनका शास्त्र बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। ऐसे ही सब कंपाइल कर दिया, लिख दिया एक जगह पर, ऐसा नहीं हुआ है, काफी रिसर्चेस के बाद उन्होंने लिखा हुआ है, और ये चीज हमारे शास्त्र में भी लिखी हुई थी दोस्तों। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस दैट आदि योगी, जिन्होंने सबसे पहले योग की नींव रखी भारतवर्ष में, बाद में ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, उपनिषद, पातंजलि योग सूत्र जिन्होंने कंपाइल किया, ये सब नॉलेज को जो आज मॉडर्न साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं या फिर मॉडर्न एरा में प्रूव कर रहे हैं, योग उपनिषद जैसे ग्रंथ पहले हो चुके हैं, उपनिषद, इन सब में ये सब नॉलेज अब बेसिक फंडामेंटल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ऑल दिस इज नॉलेज is included in our previous ancient text, friends. So is not a matter of pride for us. Yes, it is a matter of pride for us. So केवल प्राइड करके चलेगा क्या? जी नहीं, यही हमारे पास चांस है कि इस शास्त्र को यदि हमें बढ़ाना है तो मॉडर्न लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या हम नहीं कर सकते? आज गवर्नमेंट हमारे लिए, हमें मदद करने के लिए आगे आ रही है, हमें उसका फायदा उठाना है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिस इज द गोल्डन एरा फॉर आयुर्वेद एंड द योग एंड अदर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। सो लेट्स स्टैंड अप एंड ओपन अवर all the success. Okay, this is the next slide. The origin. तो योग की ओरिजिन कहां से? ऑफ कोर्स हम सभी को पता है ये इंडिया में ही हुआ है। ओके, लेकिन बुरा तब लगता है जब लोग इसको केवल एक एक्सरसाइज का नाम देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नॉलेज है काफी सालों से चलते आ रहा है और ये बहुत ही टिपिकल रीजन से किया जाता था। उसका जो एम रहता था वो बहुत टिपिकल एम रहता था, और जिसको हम कहते थे कि हमें खुद को पहचानना है, हु एम आई, इस दृष्टि से ये योग की ओरिजिन हुई थी। लेकिन आज दुनिया में हम देख रहे हैं इसको केवल फिजिकल हेल्थ बढ़ाने के लिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी करने के लिए ही देखा जा रहा है, किंतु ये ऐसा नहीं है। ये हमारे अध्यात्म शास्त्र में लिखा गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया है कि ये आपको, आप कौन है, आप में जो एटीट्यूड है, जो आप में ताकत है, उसको पहचानने की शक्ति देता है, वो योग है। जो आपके भीतर में एनर्जी है उसको कनेक्ट करने के लिए देने वाली एक ऐसी नींव है, वो योग है। लेकिन बुरा तब लगता है लोग जिसे केवल एक्सरसाइज का नाम देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए सही में प्राउड का मैटर है।
ओके, देन व्हाट इज योग? तो योग जो था, इसको सबसे पहले जैसे कि हमने कहा, द लॉर्ड शिवा वाज द फर्स्ट, ओके, हु ब्रॉट दैट योग और हु टॉट योग टू समबडी, राइट? ही वाज द फर्स्ट, ओके, एंड who compiled it, that is the Patanjali in Yoga Sutra, okay, and we have its proof. I will show you. So let's begin. The yoga creator or the first yogi, who was that? The first yogi or the Adi was the Adi yogi, that is the Shiva. मतलब ये माना जाता है कि शिव जी ये पहले क्रिएटर और द फर्स्ट योगी थे जिन्होंने इस पृथ्वी तल पर योग को इंट्रोड्यूस किया। फिर इन्होंने किसको सिखाया? इन्होंने सप्तर्षि को सिखाया। 7 ऋषि है, जिनमें से वशिष्ठ है, जमदग्नि है, विश्वामित्र है, ऐसे 7 ऋषियों को इन्होंने योग सिखाया। दे हैव टॉट दिस योग ऋषिज, देन दिस सप्त ऋषि स्प्रेड दिस नॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब हमारे दुनिया के जितने भी अर्थ के जितने भी पार्ट से अलग अलग पार्ट में ये सब ऋषि चले गए और इन्होंने योग को फैलाने की कोशिश की, किंतु सबसे ज्यादा योग डेवलप हो पाया या फिर प्रैक्टिस किया गया वो कहाँ किया गया? तो इंडिया में किया गया, भारत में किया गया, ओके। तो इसका हिंदुस्तान में इसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया गया। द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द योग प्रैक्टिस इन इंडिया। फिर इसका प्रूफ क्या है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहां के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है उसमें आपको योग की अलग अलग पोजेस देखने को मिलेगी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ योग प्रैक्टिस इन द इंडिया, ओके। देन अदर प्रूफ इज इन द फॉर्म ऑफ द टेक्सचुअल मैटर, ओके, इन द रिटन फॉर्म इन द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, दैट इज वेद, भगवत गीता, जैन एंड बौद्ध योग। बौद्ध योग मीन्स इस दर्शनों में इनका उल्लेख है, योग प्रैक्टिस का उल्लेख हमें मिलता है, ओके। अब ये जो नॉलेज था, जब शिव जी ने ये ज्ञान सप्तर्षि को दिया तब वो बहुत ही डिस्पर्स मैनर में था। फिर इसको कंपाइल किसने किया? द डिस्पर्स योगिक नॉलेज वाज फर्स्ट टाइम कोडिफाइड बाय महर्षि पतंजलि, okay, in the form of the Yoga Sutra. In Yoga Sutra, this is a granth in which 195 sutras are there. Now, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से योग को इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया, ओके। तो सबसे पहले योग को यदि हमें समझना है, मेडिटेशन को यदि हमें समझना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः। ये पहला सूत्र था। ये इसके आगे बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या अभी इस समय में, आज आपका ये लास्ट लेक्चर शुरू है, क्या आपके मन में विचार शुरू हो गए हैं या नहीं हुए हैं? बी फ्रैंक टू टेल द आंसर। इस वक्त में क्या आपके मन में विचार आना शुरू हो गया? अरे यार, ये कितना हो गया, पूरा दिन से हम बैठे रहते हैं और ये नए नए टॉपिक्स के हमारे ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं। क्या ये आपके मन में आया था? नहीं सर, इंटरेस्ट आ रहा है लेक्चर में। सही में बोलिए आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को ये सब है और किसी के इसमें मन में विचार आ रहे हैं, ऑब्वियस है, एंड दिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी, बिकॉज इन जनरल में भी हमें पता होता है कि 45 मिनट्स के ऊपर हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, इसलिए आपको बीच बीच में ब्रेक दी जाती है, ओके। तो ये एक चीज होती है। और ये जो हमारा मन है हमेशा हर चीजों में इधर उधर भागते रहता है, और इसी टॉपिक को अभी हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक यदि आपके दिमाग में बैठ गया, दिस इज वॉट एवर आई एम टेलिंग इट इन द वेरी रफ लैंग्वेज, ओके। मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूँ आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉइंट यदि आपको समझ गया तो आगे इसका यूटिलाइजेशन खुद को डेवलप करने के लिए कैसे करना है ये आपको समझ में आ जाएगा, और जो ऑब्स्टेकल्स आपको आगे आने वाले वो समझने में, वो उनको दूर करने में आपको मदद मिलने वाली। इसलिए ये 2 श्लोक आप यदि अच्छे से समझ लेते हो तो आपको फायदा ही होगा, ऑब्वियस है। अब ये भी मैं बताऊंगा कि जब आपको कंटिन्यू ऐसे चीजों को, ऐसे लेक्चर्स को फेस करना पड़ता है और आपको अटेंटिव रहने की आवश्यकता होती है, तो वो अटेंशन कैसा बढ़ाया जाएगा और उसके लिए क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखेंगे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जस्ट सी what is it? The meaning of yoga is controlling the mind from running after the thoughts and the act of that particular act of
sense organs. Do you know we have the 5 important sense organs? Yes, sir. Yes, sir. Which are Yes. they? Which are they? Eyes, ears, Eyes, ears, nose, skin. Yes, right. मतलब आंखें है, हमारी टंग है, हमारे कान है, हमारी स्किन है, राइट? ऐसे 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है इंपॉर्टेंट, because of which we are in connection with that environment. Am I right? Yes, sir. Means right Yes, now sir. you are viewing me, at the same time you are hearing me, and at the same time you are trying to concentrate this particular subject. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Means at the time we are doing multiple things. But if at the same time your mummy have prepared something, what we say, कुछ तो भी उन्होंने मीठा मीठा बनाकर रख दिया है, जो अभी आपको खाने की इच्छा है, लेकिन लेक्चर के सामने बैठे हैं, अभी ऑफ माइक कर, अभी सॉरी वीडियो ऑफ कर दिया है और वो खाना शुरू हो गया है, चाय पीना शुरू हो गया है. लाइकवाइज ओके, यदि ये डाइवर्शन हो गया, इफ यू आर डाइवर्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू योर चाय और योर दैट मिठाई, ओके, देन व्हाट विल हैपन? Ultimately you will lose concentration in this particular lecture, okay, and whatever the topic is being taught in this particular time, you will miss it. Okay, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. If you miss it, then what will happen? If you miss it, means whenever you need to use this particular topic, you will not be able to use this particular topic in your life. Okay, am I right? Yes, sir. This what actually happens with everybody. Simple example दूंगा मैं आगे, आपको आएगा ही. Just see what happened to us. Okay, हमने खाना खा लिया, मस्त हम झूल रहे थे, हमारे मन में कोई भी विचार नहीं था, not even a single thought in your mind. पेट भरा था, मस्त नींद लग रही थी, झपकी ले रहे थे, but at the same time what happened? Just see. आपको अचानक से याद आया कि आपने कल आइसक्रीम लाकर फ्रिज में रखी थी. इधर लेक्चर शुरू था, लेक्चर गए तेल लेने, बराबर है. उसके बाद हमारे मन में आया, अरे यहाँ पर तो आइसक्रीम थी, हम उठकर चले गए और हमने आइसक्रीम खा ली. ओके, तो उस समय में हम शांति से बैठकर जो लेक्चर सुन रहे थे, क्या उस पर हम कंसंट्रेट कर पाएंगे? No. नहीं कर No, पाएंगे. sir. मतलब क्या हुआ? एक्चुअल your mind was at the stable stage which was occupied by this particular ice cream, means a thought. Okay, ठीक है, to fulfill the sense of your sense organ named tongue, you missed this particular. For achieving this, means what you are doing, what our mind is doing, it is running after the thoughts and the act of the sense organ. Okay, means जब हम इनके पीछे भागेंगे तो हमारे जो इंपॉर्टेंट काम है, जो हमारी सृजनशीलता है, कुछ तो भी नई चीज करने की जो हमारी ताकत है, वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी. तो ये और एक एग्जांपल मैं इसके आगे आपको दूंगा जिससे आपको और अच्छा समझेगा. वो आपका बहुत ही पास का एग्जांपल है. ये आप लोग है पूरे जिन्होंने नीट की एग्जाम दी. ओके, ठीक है, हमारे 5 रीजन में से, समझो हमारे ऑल ओवर इंडिया में से. ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ ना, इतने लोग जो थे 25 to 50% लोग सक्सेसफुल हो गए. उनका कहीं तो भी सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट जो ये था आज के काल का सब्जेक्ट था, उसमें सिलेक्शन हो गया. लेकिन कुछ लोग बेचारे, उनके साथ थोड़ा सा जो उनको लग रहा है कि बुरा हुआ, लेकिन उनके साथ बुरा नहीं हुआ है, जो मैंने एट द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर आपको बताया था. ओके, am I correct? Yes, sir. So Yes, sir. this is my question to you. What actually happened to this all? Everybody have studied, then only 2 selected and 3 were rejected. Why this happened? What do you think? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? इस
At that time, they concentrate only study and do not disrupt it. Yes, very good. This is what we learned from the last slide. Means ऐसा कुछ तो भी हुआ था कि जिसके कारण हम लोग कहीं तो भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। एग्जाम देके आने के बाद कितने लोगों को ऐसा लगा था कि हमने एमसीक्यू सॉल्व करके हमने करेक्ट तो सॉल्व किया, लेकिन बाद में पता चले कि फिर भी हमारा नंबर नहीं लगा, मतलब गलती से वी हैव मेड देयर अ सिली मिस्टेक। ओके, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Have you thought why did happen, why this happened? Friends, answer of these is all in this your Yogastu Chitta Vritti Nirodha, and we have to learn all these and how to maintain this. तो ये एक आपके सामने इमेज है, ये आपका ब्रेन है और ये आपके ब्रेन में देखिए कितनी चीजें चालू रहती है। ये आपकी बहुत ही पसंदीदा चीज है, आपको दिख रही है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। ओके, दिस इज वन मोर जो आज का आपका अन्न वस्त्र निवारा है, यानी कि सोशल मीडिया, आपका मतलब हमारा भी ऑब्वियस। ओके, दिस इज पैसा। पैसा कैसा आएगा, है ना, दिल चाहे मनी मनी। बाद में ये Yes, कंप्यूटर आपका वर्क। ओके, केक, किसी का बर्थडे है, और ये अल्टीमेटली ये मत देखिए आप। ओके राइट, तो इतनी सारी चीजें यदि हमारे दिमाग में रहेगी तो मुझे बताइए क्या हम कुछ नया अच्छा सोच पाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं सोच पाएंगे? इसका एक बहुत ही सुंदर आपको एग्जांपल दिया था एक अमोल खत्री सर ने, कि आप हमारे पास दो प्रकार के माइंड होते हैं, वन इज द कॉन्शियस एंड वन इज द सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को स्टोर करता है जो आपके काम की रहेगी और अच्छी चीजें रहेगी जो आपके लिए मतलब ये रही। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, लेकिन वो स्टोर उसको करेगा। ओके, लेकिन अब वो उन्हीं चीजों को स्टोर कर पाएगा, तभी चीजों को स्टोर कर पाएगा जब आपके कॉन्शियस माइंड का कचरा कम रहेगा। वॉट एवर दिस इज गोइंग हियर, जस्ट सी, आपके मन में आपके गर्लफ्रेंड का ख्याल आ रहा है, सोशल मीडिया बार बार व्हाट्सएप ओपन करके देख रहे हैं, है ना, बाहर नीचे करके, बाद में वर्क का आपके पास लोड है, ये सब चीजें क्या करने वाली है, आपका जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है उसको भर के रखेगा। अब वो जब तक के उसका प्रेशर कम नहीं होगा तब तक के कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रिस्टोर नहीं होगी। तो हमें योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध जो करना है वो कैसे करना है वही बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। सो दिस मीन्स यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। ओके, मतलब यदि आप इसको कंट्रोल कर पाओगे तो ये सब विचार आपके कम होंगे। अब ये कम होने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है वो सिखाया जाता है योग में, वो सिखाया जाता है मेडिटेशन में, और उसको करने के अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं दोस्तों। तो इसको हमें क्या करना है, खाली करना है, तभी कोई नई चीज आ पाएंगी। एग्जाम्पल सिंपल देता हूँ, आपके पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है, राइट? Yes. अगर आपके पास स्मार्टफोन है उसमें मल्टीपल विंडोज ऑन रहती है, बराबर है? क्या आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होता? होता है ओवरलोड होने के बाद होता है। बहुत बार होता है। बाद में आपको ध्यान में आता है कि यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन है, फिर आप क्या करते हो, उसको क्लियर करते हो मेमोरी, बराबर है? और उसके बाद क्या होता है, आपका मोबाइल जोरों से दौड़ने लगता है। एम आई राइट? Yes, sir. एग्जैक्टली व्हाट दिस योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब आपका मोबाइल अलग अलग चीजों से कनेक्टेड था, व्हाट्सएप को कनेक्टेड था, फेसबुक को कनेक्टेड था, एट द सेम टाइम यू आर डूइंग मैसेजेस ऑन द सिंपल मैसेज सिस्टम, आफ्टर दैट यू वर सीइंग that YouTube video at the same time. Okay, am I right? We are doing all this work there. Okay, and because of that it got hanged. The same thing happens to your mind. जब उसमें बहुत सारे विचार रहेंगे तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें उसको क्या करना है, मतलब वो अलग अलग विचारों के पीछे पीछे भागेगा। अगर वो भागेगा तो उसको हमको क्या करना है, निरोध करना है। निरोध मतलब रोकना है। अब रोकने के लिए यदि आप डेलिबरेटली उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा। तो फिर हमको उसको क्या करना है, वी यूज द डाइवर्शन टेक्निक टू कंट्रोल दैट। सिंपल एग्जांपल उसका है जिसका मैंने आपको प्रूफ भी पहले दे दिया कि दैट ब्रीदिंग, रिदम ऑफ द ब्रीदिंग मेक्स योर माइंड काम।
बराबर है, राइट? ऐसा माना जाता है Yes, sir. कि मोस्ट ऑफ द चीजें आपके दिमाग में अच्छी आती है वो सुबह के वक्त सत्व के काल में आती है, जो आपका अर्ली मॉर्निंग होता है, और जिसमें आयुर्वेद ने बताया हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागे हम, तो उस वक्त में हमारे मन में विचार कम होते हैं, और इसी वक्त में सबसे अच्छे आइडियाज मोस्टली आती है हमारे दिमाग में। और यदि ये अच्छे आइडिया आती रही तो क्या हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल हम अच्छा काम कर पाएंगे, और इसके लिए हमें योग और मेडिटेशन ये टॉपिक पढ़ना है, और इसी के लिए हमें योग मेडिटेशन टॉपिक पढ़ना है। ओके, आपको ये एक इमेज दिख रही है, दिस पर्सन इज आर्किमिडीज। आपने फिफ्थ या सिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। Yes, sir. What they taught us that the volume of water comes out of that particular tub when that particular weight of a person comes in that particular tub. Okay, मतलब जितना वेट उस टब में आएगा उतने ही वेट का पानी बाहर गिरेगा, बराबर है? ये जब इसने प्रूव किया था इन्होंने, तब उनको जो आनंद हुआ था, ये एग्जैक्टली आनंद आपको होता है जब ये हमारे मन के विचार कम हो जाते हैं, मतलब जब हम माइंड को कंट्रोल कर जाते हैं, तो दैट वो जो आनंद होता है उसको यूरेका कहा जाता है, राइट? तो दोस्तों ये अगर करना है तो हमको इस स्टेप से जाना पड़ेगा कि हमको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो भी डेलिबरेटली करना है क्या? ये नहीं, वी हैव टू डू इट बाय डाइवर्शन मेथड। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तदादृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। दोस्तों, टू नो what to know your true self, which is very much peaceful and powerful। क्या हमें पता है कि हमारे भीतर बहुत सारी शक्तियां अवस्थित है? हमारा माइंड बहुत ही पीसफुल जब होता है तब वो बहुत ही पावरफुल होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जब आप इंटरनेट पर सबकॉन्शियस माइंड यूट्यूब पर डाल दोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस वहां पर मिलेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में कितना पावर होता है। 4 लेवल्स होती है सबटल लेवल तक के जाने के लिए, तो वो लेवल्स तक के, और ये बताया गया है हमारे पुराने शास्त्रों में, कौन से शब्दों में? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि जब आपको पता चल जाएगा आपके भीतर के आपका ट्रू सेल्फ, तब आप बहुत ही शक्तिमान हो जाओगे, ये कहा गया है। और वो शक्तिमान को हम यहाँ पर किसी सिद्धियों से नहीं जोड़ेंगे, हम केवल इतने से जोड़ेंगे कि जिसके कारण हम बहुत ही खुश हो पाए। Whatever, आपको क्या लगता है हम ये सब चीजें कर रहे हैं, हमने एडमिशन ली, हम करियर चूज कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? एक खुशी के लिए कर रहे हैं या केवल पैसा कमाना है एंड ऑल दैट? व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? हेलो फ्रेंड, आंसर मी। Happiness. यस, गुड, ओके। अदर वन? Dreams. गुड। केवल पैसों के लिए तो हम ये कर नहीं रहे, राइट? थ्रू जो कुछ भी हमको मनी मिलने वाला है उसके थ्रू हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। वी आर सर्चिंग फॉर दैट समाधान, व्हाट वी कॉल इन हिंदी, ओके, राइट? देन योग प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म टू नो योर ट्रू सेल्फ, which is very much powerful and the peaceful. Okay, then how? Let me explain. Just see, this is a mirror and this is your image. Okay, what we are seeing here, this mirror is clean and you are able to see your clear image here. Okay, now let me show next image. What are you observing here? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? Image is not clear. Not clear. Why? There is dust on mirror. Yes, friends, this is what I am here going to say. Just see this particular sentence. To know your true self. यहाँ पर आदमी तो वही है ना, बराबर है? Yes, sir. जो यहाँ पर था, लेकिन हम इसको देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? Because of the dust. Friend, this dust is your thoughts, behind which we are running, after which we are running. All right? And to know your true self, you need to clear this glass. Am I right? Yes, sir. Then how will you clear it? तो यही चीज आपको सिखाई जाती है, हमको सिखाई जाती है योग में। ओके, जस्ट सी,
तो ये जो चीजें हमें कौन से स्ट्रीम्स में से सिखाई जाती है? अलग अलग स्ट्रीम्स होती है योग की, राजयोग, हठ योग, भक्ति योग। भक्ति योग मतलब वो कहते हैं नारायण नारायण नारायण, है ना, हम कहते हैं ना। तो ये सब चीजें जो हम बार बार बोलते हैं, हम गुनगुनाते हैं, है कि नहीं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वॉट एवर इट मे बी, ऑल कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर, ओके। Ultimate aim is the same, Nada Yoga and Ashtanga Yoga. All these are the streams of the yoga. Okay, there are actual 8 streams of the yoga, and in that also Ashtanga Yoga is a separate. All these are working for, or the aims of all these stream is the same. What is that? Ultimate aim of all these streams is to connect to true self. मतलब मैं कौन हूं और मुझे जो मेरा एक्चुअल रूप है, मेरा एक्चुअल स्वरूप है, उससे मुझे कनेक्ट करना है, राइट? जस्ट सी दिस इमेज, दिस इज मी एंड माय माइंड, ओके, एंड आई हैव टू सी माय दिस स्वरूप, ओके। तो मुझे खुद से कनेक्ट करना है ट्रू सेल्फ में, मेरे में क्या एनर्जी है, मेरे इसमें मतलब कितने गट्स है, वो मुझे देखना है, मुझे मेरा ट्रू सेल्फ जानना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे कनेक्ट कर पाओगे? आपके दिमाग में तो, हमारे दिमाग में तो बहुत सारे विचार चालू है, हमारा दिमाग तो इधर उधर भाग रहा है, कितना टेंशन शुरू है, इधर कोविड के कारण घर में किसी की तबीयत खराब है, टीवी पर हम न्यूज आ रही है, हम मोबाइल्स में बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, जिसके कारण हमारे मन में डर पैदा हो रहा है, जिसके कारण हमें बहुत चीड़ हो रही है, काफी लोग मरते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत बुरा लग रहा है, एवरीथिंग, चिंता, शोक, भय, क्रोध, जिसके कारण हमें नींद नहीं लग रही है, ये सब हमारे साथ हो रहा है। हम मोबाइल में घुसे हुए हैं, है ना, हम पूरा डाइवर्टेड माइंड है, कैसे होगा? हम ट्रू सेल्फ से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को, बराबर है? अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। So this is what the need of particular area. Just see here the psychological conditions like the stress, anxiety and the depression, है ना? क्या ये चीजें बढ़ रही है आज? क्या आपने कभी किसी पेशेंट को जो पहले कोविड पॉजिटिव नहीं था, उसको सिर्फ बुखार आया था, और बुखार आने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, when he comes to doctor asked him to do that particular RT-PCR or the COVID antigen test, and after that he come to know that he is a COVID positive. Have you observed the change in behavior that particular person? Friends, can you answer me? Yes, sir. क्या आपने देखा है कि जिसको सिर्फ पहले बुखार आया था, डॉक्टर के पास जाने से पहले वो मतलब कुछ बिना शंका के था, किंतु जब डॉक्टर ने बोला कि आपका कोविड पॉजिटिव है, और उसके बाद उसके मन में क्या चेंज हुआ, मतलब उसके बिहेवियर में क्या आपने देखा, ऑब्जर्व किया है कभी इस दौरान? एग्जैक्टली, एंजाइटी, है ना, उसके कारण, है ना, कोई भी हो डर लगेगा ही, बिल्कुल डर लगेगा, है ना। तो ये सब चीजें आज हो रही है, तो इसके लिए हमें नींद की गोली देना ज्यादा बेटर रहेगा, कि जो ऑलरेडी कुछ तो भी साइड इफेक्ट्स के साथ कुछ तो भी बॉडी को करने वाली है पूरा, है ना, एज इट इज अ केमिकल, या उससे बेटर ऐसी चीज की जिसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो तो वो बेटर रहेगी। बताइए। हेलो, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है सर, वो बेटर होगा। वो चीज, तो क्या ऐसी चीज के लिए हम आगे हमें ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए? ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ढूंढना चाहिए, ठीक है। वैसे ही फिजिकल डिसीज, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन अगर बदल गई है, तो ऐसे वक्त में आप जो खाना भी खाते हो ना, वो खाना भी नहीं पच पाता है ढंग से। क्या अभी कभी आपने सुना है कि उस घर में एक बंदा मर गया, उसके पापा की डेथ हो गई, और उसके बाद उन्होंने जो खाना था 3 दिन तक मस्त कुछ तो भी मीठा बना के खाया था, और उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ, मतलब बहुत खुशी के साथ सब खाया था। क्या कभी आपने ये सुना है? यस नो सर। No, क्या sir. उस नो वक्त सर। आदमी को पानी भी पसंद आता है? No, sir. नो सर। नहीं आता है। Sir. समझ में आ रहा है आपको?
तो ये ध्यान में Yes, रखना है sir. आपको कि ऐसे वक्त में लिया गया खाना भी आपके शरीर को बुरा करने वाला है, मीन्स फिजिकल डिसीज करने वाला है, इन्फेक्शियस डिसीज, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. ओके, देन one more thing is the sedentary lifestyle is creating problems like the heart disease. अब हार्ट डिसीज किसी को हो जाता है, वो बंदा घबरा जाता है, अरे अभी एंजियोप्लास्टी करनी है या फिर एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करेंगे, डॉक्टर बता देंगे कि आपके इसमें इतना बड़ा ब्लॉक है, और ब्लॉक होने के बाद जो मेंटल स्टेटस, वॉट एवर इज द मेंटल स्टेटस एट दैट टाइम, you have to win that, and you have to teach that particular patient or the person how to win that situation. And for that purpose, friends, we have to learn this yoga and the meditation, and we have to use it in our life as well as in the life of that person, okay, which will help to make the pressure of that multiple of the medicines less. Okay, so for that purpose, we need this particular time. The lifetime medicine is not an answer, friends. Okay, then for that we learn Ashtanga Yoga in 3rd year. Okay, I will teach you that and explain you that fully in 3rd year. In Ashtanga Yoga, what is means, यदि आप इसको देखोगे तो अष्टांग योग में एक्चुअल है क्या, अभी हम सिर्फ हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी की दृष्टि से देखेंगे. हालांकि योग का पर्टिकुलर एम जो है ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करना हमें, ठीक है, लेकिन इसका हमने पर्टिकुलर इसको यूज कहां पर, हमने ऐसा देखा कि योग करने से, प्राणायाम करने से डिसीजेस कम होते हैं. तब जाकर साइंटिस्ट ने इसको, इसका अनुषंगिक फल, मतलब सेकंड, दैट इज ऑब्जेक्टिव और द सेकंड इज यूज इज टू ट्रीट दिस डिसीजेस. ओके, तो फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज इसमें दी गई है. Some of the yogic practices include, first is the yam, that is the self control, which teaches us how to behave in the society. Niyama, obeying the religious laws, है ना, जो कुछ भी हमारे धर्म के लॉज होते हैं उसके अनुसार चलना, ठीक है. बाद में आसनास, टू मेंटेन द पोस्चर. यदि हम हमारा पोस्चर अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सुखी नहीं रहेगा. ओके, और यदि हमारे बॉडी पार्ट में कहीं पर भी हमको पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग आवर पोस्चर, देन व्हाट विल हैपन, will we be able to concentrate at our work? No, we will not be able to concentrate at our work. Okay, then fourth one is the pranayama, which is the breathing technique, and its proof I have given you before in the last 2 slides. Okay, then pratyahara means the withdrawal of the senses. What we have to do, we have to disconnect, or we have to stop running after our sense organs. Okay, all right, means मुझे बहुत मीठा पसंद है, इसलिए मैंने दिन भर बहुत ही मीठा खाया, तो दूसरे दिन मेरे छाती में क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा. ओके, मुझे शरबत बहुत पसंद है, इसलिए मैंने दिन भर पानी न पीते हुए शरबत ही पीता गया, तो वो भी हमारे शरीर में कुछ तो भी विकृत चीज करेगा. ओके, अब ये चीजों से हमें हमारे सेंस ऑर्गन से माइंड को अगर डिस्ट्रैक्ट करना है, दूर करना है, मतलब दूर लाना है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रत्याहार, विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस. ठीक है, और उसके बाद इस सेंस को हमें कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, एक टिपिकल जगह पर. जैसे कि एक मॉरल एजुकेशन करके आपका एक सब्जेक्ट होता था, वैल्यू एजुकेशन, इफ यू रिमेम्बर इन योर अप टू 10th स्टैंडर्ड. डू यू रिमेम्बर इट? Yes, sir. देयर वाज अ सब्जेक्ट जहां पर आपको sir. ग्रेड्स मिलती थी, वैल्यू एजुकेशन करके. वहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट कराया जाता था आपके भ्रू मध्य पर, मतलब आपके भुवों के बीच में, मतलब ये जो आईब्रोज है उनके बीच में जो एक जगह है, वहां पर फोकस करने को बोला जाता था कुछ देर के लिए. तो दैट इज नथिंग बट हियर जस्ट सी अ कंसंट्रेशन, दैट इज अ धारणा. एंड कंसंट्रेशन, दैट इज द अटेंशन, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर पर्टिकुलर दैट स्टडी और वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू. ठीक है, और इसी को आगे फिक्स करना, दैट इज द मेडिटेशन. मेडिटेशन अभी हमने बहुत सुन लिया है. समाधि, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस एट दिस टाइम. बंधास आर यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑल these 8 practices, yogic practices. Okay, just see here in this particular asana, this is the halasana. If you can see me,
in this particular asana, what this boy is doing, he is touching this chin to his sternal notch. Means he is locking this pran, means this region, to this region he is locking. Okay, this locking is called as Jalandhar Bandha. All right, means what will this do? This will interrupt your breathing. Okay, and in pranayama, what we do, we control our breaths, right? Likewise, this bandhas helps to do your this all yogic practices, that is आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, मतलब ये सब चीजें करने के लिए बंदाज आपको मदद करने। लोग कैसे रहेंगे हम आगे पढ़ने वाले। बाद में मुद्राज, आप सभी को पता होगा, हमने भगवान बुद्ध जी को देखा है, इस तरीके से वो बैठे रहते हैं, है ना। ध्यान मुद्रा, ये इनको मुद्राएं कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्राणिक एनर्जी होती है जिनको हम एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और जो कोई भी प्राणायाम या फिर आसन करने वाले हैं, उनको शरीर की शुद्धि करना पड़ता है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट अ पर्सन, वन पर्सन इज अ वेरी ओबेस, 90 kg. Answer my question, friends. Will he be able to do that particular आसन? जैसे कि हम कहते हैं हलासन, ये जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए, क्या वो कर पाएगा? No, sir, he will not be able. Is it possible? No, he cannot do. Why? Because he is obese. Yes, he is obese. Then there are some kriyas also with which you have to clear your fat, means lower your fat and your weight, and after that you can practice these yogic procedures. Okay, means there are also some kriyas known as shat kriyas which will help you to lower your fat. Okay, let's go to next slide. Then what are the benefits of the yoga? Friends, you can see, and right now everybody knows the benefit of yoga, so I will not explain much. You can read this particular. It have effects on your heart, your liver, your brain, your thyroid, your pituitary gland, your mindfulness. Okay, means to doing everything mindfully. One question I again ask you, how much of you see your breath daily? क्या कभी आपने आपके सांस को देखा है? सांस मतलब वो वाली सांस नहीं, सांस बहु वाली, हमारी ये सांस ब्रीदिंग, क्या कभी आप में से किसी ने देखा है? No, sir. क्या हमें कभी ये नहीं लगा कि ये जो सांस हम ले रहे हैं, जिसके कारण आज हम जिंदा है ना, वी आर अलाइव टुडे इन द फॉर्म ऑफ अ प्राणिक एनर्जी, और हमने इतना दुर्लक्ष्य कैसे कर दिया उसकी तरफ कि हमने उसको कभी इनवॉलंटरी है करके देखने का प्रयास ही नहीं किया। क्या कभी हमने हमारे हार्ट बीट की तरफ देखा है? क्या कभी हमने देखा है? नहीं किया, क्योंकि हमने कभी खुद से कनेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की है। दोस्तों, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या कभी हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते वक्त मोबाइल देखते रहते हैं, फोन आया तो फोन पर बात करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, क्या कभी हमने खाने के साथ खुद को कनेक्ट किया? जी नहीं किया। एंड योग मेक्स दिस, जस्ट सी हियर, माइंडफुल ईटिंग, डू यू नो, being more aware of how your body feels carries over to meal times as you savor each bite or sip and notice how food smell, taste and feels in your mouth. क्या कभी हम देखते हैं कि मुझे अभी मैंने जो मीठा मीठा खाया वो कितना अच्छा है? कभी हमने उसको आनंद से लिया है? जी नहीं लिया है ना। और यही सबसे बड़ा कारण है आज के एरा में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें सिखाता है योग के इससे हमें कैसे कनेक्ट करना है। आई विल गिव वन सिंगल से डेमो आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, लेट्स सी। एंड योगा स्टैटिस्टिक, आज पूरा वर्ल्ड योग के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम लोग योग बोला कि क्या करते हैं, उसको नमस्कार कर देते हैं दूर से, है ना। whatever this is going to happen in our own country. So friends, याद रखिए, आप लोग और हम लोग भी इवन हमारे फ्यूचर है जो योगिक प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पर पुरातन काल से आ रही है उसको डेवलप करने के लिए। और ये योगा स्टैटिस्टिक्स वही बताता है कि कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब लोग अभी योग को मानने लग गए और इसका इंपॉर्टेंस समझने लग गए। इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई।
This is a quote of our most likely Prime Minister Dr. Narendra Modi sir. The yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition and is a holistic approach to health and the well-being. Okay. And Apex Institute, where you can learn this yoga also. Actually, yoga is a part of your syllabus, so we are going to teach you all these particular basic subjects. And if you want to get extra knowledge and extra degrees, you can approach these universities, that is the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi. They run some training courses. Okay, you can get there these trainings also and be a yoga instructor or yoga teacher. Then Ashtang Yoga Research Institute, Mysore. अभी तो इन्होंने ये ऑनलाइन भी लेना शुरू कर दिया है. So, आपको सिर्फ उनके जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसके लिए 7 दिन 14 दिन 15 दिन जाकर वहां पर रहना पड़ता है. ठीक है, और तब उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है और बाद में आप आपके एरिया में जाकर ये कर पाते हो, योग ट्रेनर करके काम कर पाते हो. और उसके लिए वो लोग आपको असिस्ट भी करते हैं आपका करियर बिल्ड करने के लिए. स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था बेंगलोर, ये भी एक बहुत ही स्टेम इंस्टीट्यूट है जिसको एस श्वासा नाम से जाना जाता है. ओके, और इन्होंने अभी तक काफी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर चलने वाले कैंपेनिंग करे हैं और वो इनके स्टूडेंट्स को ऐसा एक बेस प्रोवाइड करते हैं जिससे ये स्टूडेंट्स उनके एरिया में ग्रो कर सकते हैं. दोस्तों देखिए, आयुर्वेद हम स्लोली 1 by 1 ईयर बाय ईयर पढ़ते जाने वाले हैं, लेकिन योग जो हम इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, जिसके लिए 12th पास होना भी हमारे लिए, अगर हम क्वालिफाइड है तो भी वो सफिशिएंट होता है. मतलब आप स्टार्टिंग से ये सब चीजें कर सकते हो. जैसे जैसे आप हमारे कांटेक्ट में आगे आएंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन आप यदि पूछते हो तो दी जाएगी. ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है. अभी हम देखेंगे opportunities what you are going to get through this particular subject. You can be a research officer of yoga and the naturopathy, CCRYN, Central Council for Research in Yoga. Okay, ऐसी स्पेसिफिक आयुष मिनिस्ट्री ये चलाती है, एक संस्था है जिसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. ओके, दूसरी अब्रॉड कंट्रीज, अभी योगा को बहुत ही मतलब योग थेरेपिस्ट को वहां पर बहुत डिमांड है. इवन ये भी ध्यान में रखना है आपको कि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, पर्यटन होते हैं, वहां पर होलिस्टिक अप्रोच के सेंटर्स होते हैं. ओके, तो वहां पर भी वो योग थेरेपिस्ट को बुलाते हैं और वहां पर कंसल्टेंट को बुलाते हैं. और एक चीज, कुछ लोग ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि वो डिसीज को देखकर थेरापेटिक योगा प्रैक्टिस करते हैं. मतलब टिपिकल ये डिसीज है, आपको ये 3 योगा करने हैं, ये पढ़ाया जाता है और ये भी प्रैक्टिस की जाती है. मतलब भविष्य में आपके दिमाग में आया, इफ आई एम थिंकिंग दैट आई हैव टू वर्क एज अ योग थेरेपिस्ट, ओके, एंड एज अ योगा डॉक्टर, व्हाट आई एम सेइंग हियर, योगा डॉक्टर, then you can work as that in your area also. Okay, people are approaching, patients are approaching, they are asking for, according to my prakriti, what should I do? So this is a good chance for you in our country as well as in the abroad countries. And you can be a yoga aerobic instructor, clinical psychologist, okay, then yoga therapist, yoga instructor, yoga teacher, therapist and naturopath. You can open your naturopathy center, there you can teach that yoga, and you can be a trainer and instructor of the health club. So friends, this is a chance for you to get ready to fly. Okay, and before concluding my session, are you ready to do one demonstration with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, are you interested? You Yes, will sir. enjoy it. It is Yes, just yes, a sir. one. It is just a 1 Yes. minute session. Okay. For that, will you on your videos so that I can see you and your faces? मीन्स कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये मैं देख पाऊं, है ना? हाँ, if you use headphone, that will be much better for best effect. Just see here.
You have to sit in straight posture. You have to close your eyes. After that, close your eyes, friends. After that, bring your mind to see your breath or to feel your breath. Air is coming in. Air is coming out. Slow, deep breath. Step 2, keep your eyes closed. Don't open it until I say to open it. Keep your left hand on your tummy or abdomen. Just try to feel that air is coming inside your stomach, and on expiration, your stomach or your abdomen goes in. Okay, in and out movement of your abdomen. Just try to feel it for upcoming 5 seconds. Step 3, don't open your eyes. Now, for upcoming half minute, that is the 30 seconds, we are going to measure our breath. How will you measure your breath? I am telling you a process. Just see. When we breathe in, our abdomen comes out. And when we breathe out, our abdomen goes in. This going out and going in is the one oscillation. Okay. Then when I will say start, from that point, you have to measure this in and out movement of your abdomen. Mean when will you say 1? You have to measure. While measuring, you have to say 1. मतलब आपको एक ये तब गिनना है जब आपका जो स्टमक है वो बाहर जाकर अंदर आएगा. तो that one oscillation will be your 1 breath. Okay. So friends, I hope you have understood. I will say start. From that time, start measuring your breaths. Okay. 1, 2, 3 in your mind. Don't say it loudly. Okay. 1, 2, 3, start. During this particular time, if a thought comes in your mind, then distract yourself or your mind from that thought and again bring it on your abdomen. मतलब जब भी आपका मन बाहर भागेगा, विचारों के पीछे भागेगा, आपको उसको फिर से आपके पेट पर लाना है और पेट की गति गिनना शुरू करना है. इट इज क्वाइट नेचुरल. मन है उसको दूर भागना ही है. Stop. Slowly open your eyes and try to adjust with external environment. Friends, right now मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा कि
ये जो हमारा आधा मिनट था, जिस वक्त आपने आपकी सांस गिनी, आप सांस गिन रहे थे, राइट? आपका ध्यान आपके सांस पर था, जिन्होंने भी किया, ओके, जिन्होंने भी कॉन्सेंट्रेट कर पाया, हर एक कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और कर पाना ही चाहिए, ऐसा कहीं पर विधि लिखित नहीं है। ये प्रैक्टिस की कुछ चीजें होती है, ओके। जो नहीं कर पा रहा उसने ये समझ लेना चाहिए कि मेरा माइंड कितना अनस्टेबल है, पहली चीज ये, और उसको स्टेबल करने के लिए वी कैन प्रैक्टिस इट, ओके। सेकंड थिंग, अब जब हम सांस ले रहे थे तब हमारा ध्यान कहाँ पर था? पेट। कहाँ पर था? पेट पर था, बराबर है, पेट पेट पर था। अब यस सर। आप क्या आपने ये अनुभव किया कि उस वक्त चंद मिनटों के, सॉरी चंद समय के लिए, चंद क्षण के लिए विचार, जो थॉट थे, उनकी जो संख्या थी वो थोड़ी तो भी कम हुई थी, Yes. थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, एग्जैक्ट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, दैट हमारा माइंड बाहर भाग रहा था, उसको हमने एक जगह पर खुद से कनेक्ट करने की कोशिश की। इसे कहा जाता है, हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है हमारे ब्रेन में, ओके, जो कंट्रोल करता है। अब जैसा हमारा मोबाइल है ना, हमारा मोबाइल जो होता है वो एक टिपिकल मोड में ओपन होता है, पता है आपको? ठीक है, बाद में हम उसका मोड चेंज करते जाते हो, एक एक हम ऐप ओपन करते जाते हैं, बराबर है? वैसा ही हमारा दिमाग कैसे रहता है, एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में रहता है, डिफॉल्ट में, जिसको मतलब वही पूरा दिन भर 24 आवर काम करते रहता है। जैसे हमने बोला कि मोबाइल हैंग हो जाता है अगर मल्टीपल फाइल ओपन की, वैसे हमारे मन में जो मल्टीपल विचारों की फाइल ओपन थी, उसको यदि आपको क्लोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चंद समयों के लिए हमारे सांस पर हमारे मन को लाना पड़ेगा। जब हम ये करते हैं तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बंद हो जाता है। जब वो बंद होता है उस वक्त हम कनेक्ट कर पाते हैं सेल्फ से। और फ्रेंड्स, यदि हम ये दिन में 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, सिर्फ आधे मिनट के लिए जब करते हैं ना, तो उतने देर के लिए हमारे एक्टिव ब्रेन को छुट्टी मिलती है, मतलब वो रिलैक्स कर पाता है। अदरवाइज हम हमारे ब्रेन को कभी रिलैक्समेंट नहीं देते। और ऐसा माना गया है, अभी माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनी है वहां पर ये प्रैक्टिस उनके जो एम्प्लॉय है उनसे करवाई जा रही है, सो दैट दे शुड बिकम, और दे मतलब वो बन पाए, एफिशिएंट बन पाए, इसलिए, ओके। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपके हमेशा काम में आने वाली, और ये सिंपल थोड़ा सा मैंने आपको एक डेमो दिया, ऐसे काफी ट्रिक्स है कि जिसके कारण हम हमारे मन के विचारों को कम कर पाते हैं। Again I am saying, we don't have to stop our thinkings deliberately. We have just to do that, we have to divert our mind from that thinking, है ना? हमें भागना नहीं है, हमें उनको देखना है, हमें उनको ऑब्जर्व करना है, ये कितनी देर तक रहता है। दैट इज वी आर एक्सेप्टिंग दैट, और क्योंकि नॉर्मल है, हमारे मन में सोच आने, विचार आने वाले हैं, और इसी तरीके से विचारों को कम करके हम सृजनशील बन सकते हैं, यानी कि हम कुछ तो भी किसी चीज के पायोनियर बन सकते हैं, तभी अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इफ यू want to connect with us, you can see this website and you can contact on this number. If you have any question, you can ask me. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Wonderful presentation, I must say, Dr. Gauri Shankar, sir. And I think this will arouse interest in students among the yogas, which is our rich heritage. All over the world, yoga is in practice now. Entire world celebrated the Yoga Day. And few things I want to say. Dr. Gauri Shankar, sir, can you hear me? Yes, sir. Why don't you start the yoga class for our students and teachers regularly when we will be offline? We will be meeting offline. You and Krupali madam, both of you, conduct one. When I was in previous college, there was one NGO who used to conduct a dhyan session, meditation, not only for just 20 minutes. Say,
they used to operate online, and entire class used to meditate for 20 minutes only, 15 to 20 minutes, daily 15 to 20 minutes. That was wonderful thing, and it was very pleasant experience, and it soothes the mind and calms the mind and relieves the anxiety. Everyone of us is in a arousal state nowadays and anxious. That's why anxiety is growing. And there are some changed social structure. That's why many of us are in depression also. So to overcome these negative qualities, this yoga can help. Yoga and meditation can help a lot. So in that respect, and it is also, I mean, we should practice what we preach. It is, we are teaching yoga, but what if we ourselves are not following? Not following. Yes, sir. That's why it's my humble request to you that you please arrange it for our students and faculties regularly. Yes, sir. In the morning itself, we will have 10 to 15 minutes meditation Yes, sir. session, and in the evening, few asanas, few mudras, and we will walk away home. Yes, sir. It will be That a will great honor. be, that will be wonderful. One thing. Secondly, we should be pioneer of many things. We should not underestimate ourselves. Yes, sir. And we all know the power of yogas. And there are some books on yogas. When I went through those books, I found that preventive aspect has been mentioned in those books. By doing these mudras, particular mudras, by doing particular asanas, you can prevent this disease, that disease, etc., etc. One thing. There is one, as you being a person from Swasthya department, which deals with the national health programs, there is one school health program. Yes, sir. Why can't we suggest the government of India to introduce yoga in school itself for Yes, all sir. boys? Yes, sir. We can And suggest the it. body And is that time, that body, their body is their elasticity of their body is ductile. yes, sir. At our age, we cannot. Our body is not that much ductile to do so many asanas. We find it difficult to do. We have enlarged tummy. There are a lot of restrictions. But if you mold the students from that time only, we can Yes. create a healthy society. Yes, sir. Government of India is expending a lot on health, and by the people reaches to their 30s, they start having nowadays diabetes mellitus, obesity, ischemic heart diseases in so early ages nowadays. So by introducing the yoga at the school level only, we can prevent, we can build a healthy India, healthy society, and can save a lot of money of the nation. Yes, sir. It There, is our- you just put a letter to the government of India through our Yes. college to introduce yoga in school health program essentially. And we should be the pioneer of many things. We should not underestimate ourselves Yes, sir. and make them that they follow it by Yes. putting the RTIs. Art. Yes, sir. We can create a mass movement also. We can take the signature of, we can start the signature campaign for that also, from our Ayurvedic fraternity, from reputed NGOs, non-government organizations also, students also. So that will take a momentum. Second, this thing. The third thing, just for your knowledge, if you can see me, this is one book, Yoga Sutras, the main book of Patanjali Yoga Sutras. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. With Yes, sir. Tika Bhojdev. Why this is important, I'm showing you. In this Bhojdev Tika, that give beautiful explanation, or beautiful, he had beautifully defined the 5 vatas. Why it is called as Samanvata, why it is called as Apanvata, why it is called as Vanvata.
the beautiful description of the definitions of these. And the role of commentators is always to define the unsaid part. So this is Patanjali Yoga Sutra is the main book of your yoga. Yes, sir. And please have this tika with you. Bhojdev Krut tika is very wonderfully Written and explained it. explained. Second is the small book called Girana Samhita. Gain understanding. Yes, sir. So why, what is the importance of this book is that it had mentioned the foods, all the foodstuffs which the person who is interested in doing yogic practice, what he should eat, what he should not eat, all the dhoti karmas. It may or may not be possible to do all the things, but he had mentioned the foodstuffs, what is required in attaining the deepest level of meditation and improve the concentration. That is second thing. Third thing is this book called Shiva Samhita. Yes. Why I am showing this book to you is that in this book Shiva Samhita, now in our Ayurveda, the description of brain, spinal cord is a little obscure. Is not that much up to the level. And whatever is borrowed is that is from the yoga science. So in this book called Shiva Samhita, you will find the description of brain and the spinal cord and the nerve fibers. It's so beautifully, and they have used the terminology which was again the terminology prevailing in those days to describe the things, how the neurochemicals moves, and even the precise anatomical location of this brain and the spinal cord and the nerves. Padmatantuvat nipu, Padmatantu, and they have used adjectives to the nerve fibers. Padmatantuvat niva. Yes, sir. So have these books in our library also, Yes, sir. and please propagate and be practical in approach, and let us start improving the things from ourselves. Yes, sir. Let us practice what we preach. Yes, sir. Isn't that true? My friend Ravi is there. Dr. Ravi Pardes is there. Yes, sir. I'm Yeah, should we not Yes, believe on sir. what we should practice what we Yes, sir. preach? Yes, sir. Yes, definitely we have to do that. Without that, we will not be able to set an example for our students. Yes, from leading from the front is exemplary action. The exemplary Yes, sir. thing should be. Yes, yes, yes. So I think today is the wonderful day, and day had started with a bright note, and it's ending on a bright note. All the lectures of today were fantastic, absolutely fantastic, and I congratulate the organizers for organizing such beautiful lectures. They started with very motivational lecture by Dhanraj Gaukar sir. We all impressed how one person with a strong determination can create his own world, and the world follows such person all over the world. This is exemplary example of Dhanraj Gaukar sir we are having. After that, we had seen the opportunities for Ayurvedic peoples in Germany by Topin madam, Helen Topin madam. That after that, Itankar sir enlightened us regarding the pharmacognostic and contributions of pharmacologic importance and the pharmacologic action of our drugs, and both in a practical way and a metaphysical way also. And as usual, Sanskrit madam delighted with her pictorial presence, and nowadays now I'm feeling that all the students have got a little confident that they can talk a little bit in Sanskrit within few short span of some 5-6 days. After that, Hadore sir had enlightened us with on the concept of biodiversity so impressively, and now we are ending the day with a very bright and exuberant presentation, and
practical demonstration of, although it was exercise of 1 minute, but within that 1 minute, Dr. Gauri Shankar sir had successfully told us what is the power of the mind. If you concentrate mind on particular things and relieves it from all and calms it down for some time and relieves it from all the stress, you can win over the stress. Definitely, that was very laudable. With this remark, I hand over the proceedings to Vaishali Madam, who is the host of the today's program, for concluding remarks. So over to you, Vaishali Madam. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Rukude sir. Such an interesting lecture by very interesting slide for newcomers and us also. Thank you very much. This was our last session. We will meet tomorrow at 9 a.m. sharp. So with the permission of respected principal, sir, may I conclude this meeting? Yes. Session? We will meet tomorrow. Bye-bye. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.